So you have already done the Macaulay duration, which was measured in terms of years. Okay, that means the more the duration, the more the sensitivity in the bond. You have checked the modified duration, that is approximate modified duration. That said, if 1% change in yield to maturity, the bond price changes by how much percent? So that was measured in terms of percentage. That means 5% था, कंपनी ने ऑफर किया, इंटरेस्ट रेट्स हैव गॉन बाय 1%, gone by 1%. So bond price will gone up. Okay, bond price will go down by dash percentage. That's what we have discussed in modified duration. Okay, now the next point we are going to discuss is money duration, or also called dollar duration. Very simple. This is even more better way to understand the sensitivity in dollar terms, in monetary terms. So 1% change in YTM. Okay, so 1% change in YTM, the bond price changes by how many dollars? That means if I say dollar or money duration measures the dollar price change. Okay, I'm writing a point. It measures the dollar price change. मतलब कुछ भी नहीं है, अगर 1% YTM बढ़ता है तो आपका बॉन्ड कितने डॉलर से, यहां पर परसेंटेज था, अब हम डॉलर्स यूज कर रहे हैं, कितने डॉलर से गिरेगा, दैट्स इट. इट मेजर्स द डॉलर प्राइस चेंज फॉर ए 1% चेंज इन यील्ड. अगर आपका यील्ड बढ़ता है तो बॉन्ड गिरेगा कितने डॉलर से, अगर आपका यील्ड गिरता है तो बॉन्ड इंक्रीज होगा कितने डॉलर से. ओके, so let's finish the money duration and let's move to the price value of basis point. So here we are. So if we take money duration of a bond position, also called this, is expressed in this currency units. It's nothing but annual modified duration into full price of bond position. So full price. Okay, money duration is sometimes expressed as money duration per 100 of bond par value. Money duration per 100 units of par value is equal to annual modified duration into full bond price per 100 of par value. You know, like what is $100? The full value is always the face value. Okay, face value is what you should get at the maturity date. Full value will be given to in the question itself. Understand? The full value will be the face value along with the interest, what you should get, along with the coupon, what you should get. Fine, that is that is nothing but the full value. Am I right? Now let's take a question. Calculate the money duration on a coupon date of a $2 million par value bond, that is modified duration of this. They have given the modified duration, they have given the full price even. So what's the formula? Modified duration into the bond value, the total, the bond position you are having $2 million, into the full price. That means we are taking this 101.32 divided by $100 denominated bonds. Okay, so अगर आपको bond position देखना है तो either you do one thing, 2 million divide by 100 करो और 20,000 ले लो into 101.32. if you do, you get the same thing. Or else if you take the $2 million, you change the amount to per unit wise. Okay, that means what I mean to say per unit wise in the sense, like full price of bond position you'll get if you take this as per the $100. Okay, now money duration per $100 par value is this.
This is per $100 par value. Now, what does it mean? See, that is 7.4 to the modified duration into the full price of the bond. This is per dollar, this is per $100 par value. Or you get this also, as I already explained. So 37,589. So bond, so if for example, if you can see here, this is the first question. We have found out the like money duration. Money duration is measured in terms of currency. This is the currency value. Now let us see what will be the impact on the value of the bond of a 25 basis point increase in its YTM. That means if the yield to maturity increases by 25 basis points, definitely the bond value will decrease, but by how many dollars? How many dollars? So let's take this, the total value of the money duration, the total value of the money duration, what we found out, into the basis points, that will give you the bond value decreases by these many dollars. Please go through this. You can ask me if you have any doubts. इधर पोजीशन क्यों नहीं ले रहे जयंत? कौन सा मनी position? ड्यूरेशन पर $100 आप ऑफ चाहे पार वैल्यू. हाँ पार यहाँ ले रहे ना सर, मनी ड्यूरेशन पर $100 ऑफ पार वैल्यू. वही उधर बॉन्ड वैल्यू 2 मिलियन क्यों नहीं ले रहे उधर? कौन सा 2 मिलियन था ना, विच इज द वैल्यू ऑफ ऊपर ले बॉन्ड. रहे ना सर, यहाँ पर ऊपर लिया ना 2 मिलियन. Okay. 7. Okay, either ways we can do. Either ways you can do, your wish. The ultimate aim is nothing but how much the bond value has decreased in dollar terms. That's it. चलिए एक क्वेश्चन और करिए. So this is one more question. Calculate money duration. So annual modified duration into price value, that is full price of the bond they'll give you, or modified money duration. This full price, if you want, you can divide money duration by annual modified duration. Anything is all right. Any formula you can follow, that's not a problem. If the data is given, what kind of data is given, that depends upon the data, what kind of formula you need to use. Okay, if you want to use, if they give you full price of the bond and money duration, you have to multiply with change in the yield. Okay, yield to maturity. So let's take a question. Assume that an investor holds a $5 million par value, okay, of bonds in a 4.5% bond maturing on 31st March 2015. The bond is priced at this per $100 of par value to yield this. तो आपका yield बढ़ गया है, okay, on a semi-annual basis for settlement on 30th June 2014. तो वो क्या बोल रहा है, आपने बॉन्ड इतने में खरीदा, ठीक है, इतना par value था, this much yield is what they are promising, and they are taking it as semi-annual basis. They will give you the coupon or whatever they have promised semi-annually, half yearly. Total market value including accrued interest. This is what the full price they have given. Okay, that is nothing but this much per $100 par value. If you check this, if you check this as a, if you take this per $100 par value, if you take this, divide this with the total bond position. Okay, if it is 100 million something, the bond position is, okay, so $100 पे $5 अप्रोक्सीमेट का आपको कुछ इंटरेस्ट मिल रहा है. ओके, अब ये बॉन्ड का वैल्यू आ रहा है. सो दे आर आस्किंग द बॉन्ड्स annual maturity duration. They have already given the maturity duration, because if you want to find out the money duration, you want modified duration. So आपको like maturity duration दिया हुआ है
and you know, if you want to find out the money duration, modified duration, if you want to find out the, see, they have given you Macaulay duration. How will you find out the modified duration from Macaulay duration? Modified duration is nothing but equal to Macaulay duration divided by 1 plus y, the yield to maturity which they have given. If you divide Macaulay duration with yield to maturity, you get the modified duration. Okay, that's the formula. So now money duration is nothing but annual modified duration, which is you need to find out. How will you find out? That annual modified duration is Macaulay duration divided by 1 plus yield to maturity. So that we have done into the full price of the bond which you paid. Okay, so this is what, this is a discount bond. In the previous case we have taken a प्रीमियम बॉन्ड, am I right? आप टेक्स्ट बुक में देखिए, ये आपका प्रीमियम बॉन्ड है 101.32. This is the full price of the bond. And the case what we are seeing in the another slide is a discount bond. That means you paid 97.20 for the bond, and on maturity you will get $100. Please try to understand. These are two cases what I'm explaining to you. So now, if I find out this entirely, I get 236.90. What does it mean? So it means that for 1% change in yield or increment in the yield, I may lose $236.90. There's a printing error. I may lose $236.90. ओके, अगर 1% से मेरा yield to maturity बढ़ता है तो मेरा बॉन्ड वैल्यू 236.90 से डिक्रीज हो जाएगा. फाइन, प्लीज गो थ्रू दिस, विल मूव फॉरवर्ड. They have taken per bond wise. Okay, you can take position wise also. अगर आपको अमाउंट पोजीशन वाइज दिया हुआ है तो वैसे जाओ. अगर आपको पर $100 पार वैल्यू वाइज दिया तो ऐसे जाओ. Okay, now we are going towards the price value of basis point. So what does this price value of basis point say? It says definitely when you have seen the modified duration, that for a 1% change in yield to maturity, that means if your yield to maturity increases, your bond value decreases by a certain percentage. In money duration, you have seen if there is a 1% change in yield to maturity, your bond value decreases by some dollars. Okay, this is what you have seen. Here, price value of a basis point is the money change in the full price of bond. Okay, that is the changes, the monetary change or the change in dollars in the full price of the bond when the YTM or yield to maturity changes by 1 basis point. So that is 0.01%. So मैं क्या बता रहा हूं आपको, ये modified duration था, ये money duration था. Price value of basis point is nothing but with how much? 1 basis point change in YTM, your bond price is going to decrease by how many dollars? That is what they're asking. Sir, clear हुआ आपको? शिवांग, clear हुआ? Hello. Yes. Yeah, sir. शिवांग? Yes, sir. ठीक है ना? तो यहाँ तीनों में क्या डिफरेंसेस है? प्लीज देखो, एक कॉलम बना देता हूं, फिनिश करते हैं इसको. कॉलम में ये है, Okay. ये आपका मॉडिफाइड ड्यूरेशन, ठीक है. ये आपका मनी ड्यूरेशन, मैं इसको डॉलर ड्यूरेशन बोल दूंगा. ये मैं बोल दूंगा बेसिस पॉइंट ड्यूरेशन, समझ लो, ठीक है ना.
तो मॉडिफाइड ड्यूरेशन क्या बोलता है? 1% increment in YTM, your like bond price decreases by some X%. Okay, it decreases by X%. मतलब अगर आपके yield to maturity 4% से 5% हो गया, तो आपका बॉन्ड प्राइस सपोज पहले 120 था, तो वो अब 115 हो जाएगा. फॉर एग्जाम्पल, सी लेट अस टेक एन एग्जाम्पल. ओके, नाउ ड्यूरेशन, डॉलर ड्यूरेशन. For 1% increment in yield to maturity, the bond price decreases by some X dollars. ठीक है, तो अगर आपका yield to maturity 4% से 5% हो गया, तो आपका एक सेकेंड, सॉरी, बॉन्ड प्राइस, सॉरी, यहां पर आपका जो yield to maturity था 4% था, और वो 4% से 5% हो गया, तो 1% इंक्रीमेंट हुआ. उससे आपका जो बॉन्ड वैल्यू है या प्राइस है, वो सपोज 20% से डिक्रीज हो गया. दैट्स व्हाट इज अ वेरी क्लियर कट लाइक इंटरप्रिटेशन ऑफ मॉडिफाइड ड्यूरेशन. एंड डॉलर ड्यूरेशन क्या बोलता है? अगर 4% से 5% अगर आपका yield to maturity हुआ, तो आपका बॉन्ड प्राइस $20 से डिक्रीज हो गया. सपोज लास्ट, अगर आपका yield to maturity 1 बेसिस पॉइंट इंक्रीज हो जाता है, तो आपका बॉन्ड प्राइस इज डिक्रीजिंग बाय सम X dollars. So for 1 basis point increment in yield to maturity, we are not taking in percentage terms, boss, we are taking in basis point. So 1 basis point happens to be 0.01%, and 100 basis points is 1%. You should know this. तो मतलब अभी तक हम लोग सिर्फ परसेंटेज के टर्म्स में देख रहे थे, यानी हम लोग अभी तक 100 बेसिस पॉइंट्स के बेसिस पर चेक कर रहे थे बॉस. अभी हम लोग 1 बेसिस पॉइंट के हिसाब से चेक करेंगे, बस उतना ही फर्क है. टिल नाउ फॉर 1% चेंज, that is equivalent to 100 basis points, you were checking the bond price change. That means if the yield to maturity increases by 1% or 100 basis points, the bond value decreases by what percent or what dollars. Okay, that was for 1% change. That is for 100 basis points. Now just 1 basis point. तो 1 basis point increase होता है, तो yield to maturity decrease होता है by how many, or by some X dollars. ठीक है, चलो let's do a question and wind up duration. We'll go with the convexity. Please look at this question. So a newly issued 20-year 6% annual pay straight bond is priced at this. 20 years इसका maturity है, 6% coupon है. Calculate the price value of a basis point for this bond, assuming it has a par value of 1 million. मतलब अगर ये बॉन्ड का जो yield है, वो अगर 1 basis point से भी बढ़ जाता है या कम हो जाता है, तो आपकी बॉन्ड की वैल्यू क्या हो जाएगी? ओके, लेट्स टेक. तो ये इसमें फाइंड करने के लिए व्हाट दे आर डूइंग इज दे आर यूजिंग सम फॉर्मूला. इफ आई एम नॉट रॉन्ग, फॉर्मूला में देता हूं. सेम मॉडिफाइड ड्यूरेशन का ही फॉर्मूला आएगा, इंक्रीज डिक्रीज, because there also we took percentage. Now here we are taking just 1 basis point, that is 0.01%. So this is the formula they are using. Price value of basis point, another version of money duration. This is one of the money durations only, because this is also calculated in terms of dollars. Price value of basis point for the bond, estimate of change in full price given 1 basis change in yield to maturity. मतलब अगर आपका yield to maturity 1 basis point से बढ़ता है, घटता है, increase या decrease होता है, तो what is your bonds price change? So this is what you'll find out. This is increase. This is like decrease in the interest rates with 1 basis point, increase in the interest rate with 1 basis point. Okay. DV01 dollar value भी बोलते हैं इसको. In FRM we use DV01. This terminology more often. FRM में हम ऐसे use करते हैं इसको.
Let's do the calculation and math here. Coupon with exactly 5 years remaining until maturity offers a 4% coupon rate with annual coupons. एक आपके पास एक बॉन्ड है जिसका मेच्योरिटी 5 इयर्स का है, 4% कूपन ऑलरेडी ऑफर कर रहा है. यील्ड टू मेच्योरिटी जो है वो 6% है और ये प्राइस पे कर रहे हैं आप $100 के बॉन्ड को खरीदने के लिए. दैट मींस इट्स अ डिस्काउंट बॉन्ड. ओके. एंड अभी क्या हो रहा है कि आपका जो बॉन्ड है ये पे कर रहे हैं आप $100 के लिए. फाइन. अभी आप प्लीज ध्यान से समझो. 6% is the yield to maturity and your yield to maturity is decreasing with 1 basis point in one scenario. It is increasing with 1 basis point in scenario number 2. तो हमने वो कम करके उसका पूरा डिस्काउंटिंग कर दिया बॉस. दिस इज व्हाट वी गॉट. द बॉन्ड्स प्राइस which we need to pay today as per this YTM. okay, because the YTM has decreased by 1 basis point here. तो ये पे करेंगे हम लोग $100 के लिए अगर YTM डिक्रीज होता है. ठीक है. इन जनरल तो ये पे करना है 6% के हिसाब से, बट 5.99 के हिसाब से ये पे करना है आपको. नाउ सेकंड केस अगर YTM बढ़ गया तो ये पे करना है आपको $100 के बॉन्ड के लिए. अब आप लेके जाओ और वो फॉर्मूले में प्लग एंड प्ले. So you'll get the price value of the basis point. वो क्या बोल रहा है 0.039832. मतलब इसको अगर आप देखो डॉलर टर्म्स में करना चाहो तो कर सकते हो. अब ये सेंट्स बता रहा है 0.03 सेंट्स. ओके. व्हाट इज दैट? हेलो. In terms of cents. हाँ सेंट्स. चलो अगर वही मेरे को पॉइंट आ गया. सपोज आई हैव दी हियर इट इज 11 सेंट्स फॉर एग्जांपल PVBP. अब मुझे क्या करना है? फॉर $1 million par value bond, each 1 basis point change in the yield to maturity will change the bond's price by the cents into $1 million. It will change the bond's total value. मतलब अगर आपका yield to maturity अगर 1 basis point से इंक्रीज भी हो रहा है, डिक्रीज भी हो रहा है, तो यहां पर दोनों में लिया है उसने. तो आपका प्राइस वैल्यू ऑफ द बेसिस पॉइंट ये दिया हुआ है. each 1 basis point change will change the bond's price to this. मतलब आपका बॉन्ड का प्राइस इतना हो जाएगा एवरेज में. ठीक है ना. दैट इज 1170. okay. So this is what now you have to multiply with the whatever the this thing you have got. You have to just multiply with what? The $1 million जो भी आपका बॉन्ड पोजीशन है जो होल्ड कर रहे हैं उससे मल्टीप्लाई करिए, आपको चेंज मालूम हो जाएगा. ओके. Bond price का. अगर पॉजिटिव चेंज है तो इंक्रीज हो रहा है बॉस, नेगेटिव चेंज है तो डिक्रीज हो रहा है. इतना ही समझ लो बस, कुछ नहीं है इसमें. And see at times PVBP you can do with the help of modified duration even. So कैसे करेंगे? अप्रॉक्स मॉडिफाइड ड्यूरेशन का फॉर्मूला ये है. इसमें बस आप पुट कर दो सारे वैल्यूज आपके which you have found out here, plug and play, आपको वैल्यू आ जाएगा. एंड दैट अगेन विद द मार्केट वैल्यू ऑफ द बॉन्ड which you paid with the 6% yield to maturity into the 1%, because you know already you know this fact very clearly. Modified duration is always taken as per 1% change. That means 100 basis points, and that makes this. Okay, so you get this one, the same value. Please have a look at this. We'll move forward. Almost done with the duration thing. Yeah, Jayanth. Okay. Hello. Yes, Jayanth. So so in price value of basis points, every time you have to see this one. I meant to say 1 basis point, right? Only So one basis what is?
like whatever the coupon that he is providing, that will be coming under a plus or minus of that. What, sir? एक बार ऊपर जाइए ना. Yeah, 6. Yield maturity is 6%, right? Yes. So lowering the yield, what to One time you have increased it, one time you have decreased it. It will increase and decreased it. decrease, na? Okay, fine. Fine. Yeah. Now, see, let's come to this one thing. You clearly remember we did the modified duration. Okay. So what we did in modified duration, you took a increase and decrease. So ये आपका duration आया, approximate change in price for 1% change in yield to maturity. ठीक है ना? तो आपको ये modified duration में मिला था. अभी हम लोग क्या देखे हैं? You have seen the PVBP, correct? Yeah, 1% change in BP. Now let's do the portfolio duration. See, as you know, you can you can just take a single bond. Okay. Apart from that, you can also have a portfolio of bonds. Fine. So in portfolio of bond, what happens? You also have duration for that portfolio of bond. So there are two methods to calculate the duration of bond portfolio. That is, I'm speaking about bond portfolio. Fine. So what does this bond, what are you doing here? The bond portfolio managers always try to measure the whole portfolio duration. The higher the duration, the more sensitivity in such kind of portfolio, the more interest risk in such kind of portfolio of bonds, correct? So they always are worried about this duration thing. So they want to calculate that duration. And how will they do that? How will they do that? The weighted average of time to receipt of aggregate cash flows. मतलब कितना टाइम आपको लगता है, सेम वेटेड एवरेज, सेम प्रोसीजर, कि वो कैश फ्लोज आपको वो पोर्टफोलियो से मिल जाए. द टाइम फ्रेम इन विच यू विल रिसीव द एंटायर कैश फ्लोज फ्रॉम दैट बॉन्ड पोर्टफोलियो. सेकंड, वेटेड एवरेज ऑफ इंडिविजुअल बॉन्ड ड्यूरेशंस कंप्राइजिंग द पोर्टफोलियो. यानी आप जितने भी बॉन्ड्स आपके पास है, सबका आप इंडिविजुअल बॉन्ड ड्यूरेशंस फाइंड करके सबको ऐड कर दो, फिनिश. उनका एवरेज निकाल के वेटेड एवरेज ऑफ इंडिविजुअल बॉन्ड ड्यूरेशंस कंप्राइजिंग द पोर्टफोलियो. डोंट वरी, विल डू अ प्रैक्टिकल क्वेश्चन हियर. So these are the two bonds you have in your portfolio. Maturity is given, price is given, yield is given, macular duration, modified duration, par value, market value, weights. Okay, everything is calculated, pre-calculated. Now, so portfolio duration using method one, the weighted average of time to receipt of the aggregate cash flows. So आपका क्या है? The prices are per $100 of par value. Yield to maturity are effective annual rates. ठीक है. तो लाइक आपको पता ही है कि ये आपका टोटल लाइक मार्केट वैल्यू ऑफ द पोर्टफोलियो है. एंड यू रिमेंबर वी आर फर्स्ट फाइंडिंग आउट द यील्ड टू मैच्योरिटी. फाइन. So how will you find out the yield to maturity? That is nothing but equivalent to IRR. Yield to maturity is nothing but equal to IRR. That is the present value of cash outflows should be equal to present value of cash inflows. So you got your yield to maturity 12.366%. I don't think I have to explain you again and again this one. Now you are finding out the maculate duration. Maculate duration, all this like आपको पता है कैसे करना है. आपका what are the data they are giving? Okay. Two bonds, market value between the two bonds. So आपके यहाँ पर see this is the bond number one, bond number two are there na, 2 years. Acha, this is the par value of bond number one. Maturity is 1 year. This is the par value of bond number two. The maturity is 2 years. Fine. So let's take those values.
So 1 into 1 lakh divided by, you are just discounting with this yield to maturity, divided by like plus 2 into 5 lakhs divided by the yield to maturity, whole divided by the total portfolio. Correct? Is this the way you can do? Weighted average कैसे करते हैं? How will you do the weighted average? Weighted average कैसे करते हैं बॉस? Yeah. हेलो शिवांग, weighted average कैसे करते हैं शिवांग? इंडिविजुअल वेट्स लेके कैश फ्लो मल्टीप्लाई हाँ, करके। मतलब प्रोपोर्शन, एक एक का प्रोपोर्शन लेते हैं, ठीक है, द फर्स्ट वन प्लस सेकेंड वन, इसका प्रोपोर्शन जो भी इसका सपोज कुछ परसेंटेज है। अच्छा ठीक है, आप WSEC किए थे ना, व्हाट डिड यू डू इन WSEC? डेट आपका 40% है इन द होल, दैट इज 0.40 प्लस 0.60 डेट प्लस इक्विटी, करेक्ट? 100 में से ये 40% और इक्विटी कितना? Debt plus equity. So proportion of the first one in the portfolio and the proportion of the second one in the portfolio. In this bond portfolio, first वाले का क्या proportion है, second वाले का क्या proportion है, divide by the total. That is giving you the weighted average. So that's what is happening here. We are taking the first one, the second one, divide by the whole thing. Okay. So ये आपका macular duration आ गया. See, आपके books में कुछ दिया हुआ नहीं है श्वेजर में. IPT क्यों नहीं दिया है, क्या है, इनको भी पता है, बट हाँ सेकेंड मेथड को यूज कर रहे हैं. सेकेंड मेथड इज वेरी इजी. दैट मींस दे आर आस्किंग यू टू फॉलो द सेकेंड मेथड व्हिच आई एम गोइंग टू एक्सप्लेन यू राइट नाउ. वो तो एकदम सिंपल चीज है, समझ में आ जाएगा आपको. So now here we got the macular duration. Modified duration is nothing but macular duration divided by 1 plus yield to maturity. You get the modified duration. And you know what does it say? If there is a 100 basis point change, that is 1% change in yield to maturity, will tell you how much your bond is going to increase or decrease by this much percent. Okay. See, आपको एक बात याद रखना है, आपके दिमाग में आ रहा है कि ये बॉन्ड इंक्रीज हो रहा है कि डिक्रीज हो रहा है. तो यू हैव टेकन टू केसेस बॉस. वन टाइम आपने इंक्रीज करके देखा, दूसरे टाइम डिक्रीज करके देखा. तो आपको कंक्लूजन क्या है कि 1% चेंज इन यील्ड टू मैच्योरिटी, ओके, अब वो चेंज आपका इंक्रीज वाला है तो बॉन्ड इज गोइंग टू डिक्रीज बाय दिस मच परसेंट. डिक्रीज वाला है तो बॉन्ड इज गोइंग टू इंक्रीज बाय दिस मच परसेंट. फाइन. अभी आपने क्या है, PVBP किया तो आपको 0.117 यानी 11.7 सेंट्स आया. तो अगर 1 बेसिस पॉइंट आपका बढ़ता है तो आपका बॉन्ड 11.7 सेंट्स से डिक्रीज हो जाएगा. 1 बेसिस पॉइंट डिक्रीज होता है तो 11.7 सेंट से इंक्रीज हो जाएगा. दैट्स व्हाट, उतना ही है. अगर 1% आपका यील्ड टू मैच्योरिटी बढ़ता है और आपका ड्यूरेशन जो है 13.6% आता है फॉर मॉडिफाइड ड्यूरेशन, दैट मींस 1% यील्ड टू मैच्योरिटी बढ़ा तो बॉन्ड इज गोइंग टू डिक्रीज बाय 13.6%. and 1% yield to maturity decrease हुआ तो bond is going to increase by 13.6%. That's it. वही है. Decrease को increase, increase को decrease. That's it. तो यहां तक हो गया. अब आप देखो कि ये जो अप्रोच है आपको CFA लेवल 1 में नहीं लगाना है. आप आराम से ये वाला अप्रोच लगाओ. Increases by 100 basis points. हाँ, तो बॉन्ड वैल्यू, आपका बॉन्ड का जो प्राइस है वो डिक्रीज हो जाएगा इतने परसेंट. करेक्ट, ठीक है. आपको जो है वो ये यूज करना है, दैट इज द वेट इनटू द ड्यूरेशन. वेट इनटू द ड्यूरेशन, वेट इनटू द ड्यूरेशन. वेट कैसे फाइंड करेंगे बॉस? मार्केट वैल्यू ऑफ द बॉन्ड बाय मार्केट वैल्यू ऑफ द पोर्टफोलियो. दैट मींस यू आर गिविंग द वेटेज टू द मार्केट वैल्यू, यानी जिस बॉन्ड का मार्केट वैल्यू आपके पास है डिवाइड बाय टोटल पोर्टफोलियो से डिवाइड करके देखो. तो अभी अपने केस में क्या हो रहा है, मार्केट वैल्यू क्या है आपका, देखो आपका मार्केट वैल्यू है मार्केट वैल्यू प्राइस दिया हुआ है, मार्केट वैल्यू. अच्छा ये है. कैन यू डू वन थिंग? अच्छा वेट्स दे हैव गिवन 16.81%. 16.81 को डिवाइड बाय 100 करो, यू विल गेट द डेसिमल. 16.1 divided by 100, 0.1681. That is the weight,
and 83 like 0.8319, that is the weight. So you are taking both the weights and you have the duration for both of them. Okay, ये आपका weight है, fine, into आपका ये 1 year का आपका maturity का date है, ठीक है ना? That is what is the formula says. Number of bonds, ये आपका W1 D1. पोर्टफोलियो मैक्युलर ड्यूरेशन, ड्यूरेशन तो दिया ही नहीं ना इसने, कहाँ दिया ड्यूरेशन? ठीक है, यहाँ पर तो नंबर ऑफ बॉन्ड्स हमारे 1 है, यहाँ पर हमारे पास इसके 2 बॉन्ड है, 2 इयर्स का टाइम दिया हुआ है। अच्छा, बॉन्ड का 2 इयर्स का टाइम है। अच्छा, ड्यूरेशन दिया ना क्वेश्चन में 1 and 2, so they have given you the maculous duration 1 and 2. just plug and play, डायरेक्टली वेट ले लो, ड्यूरेशन से मल्टीप्लाई कर दो. This is the weight of the first one into the duration what it has, weight of the second one into the duration what it has, you get the portfolio macular duration, divide by 1 plus yield to maturity, you get the modified duration. That's it. That means अब portfolio का भी वैसे इंटरप्रिटेशन है, 1% change in yield to maturity, your portfolio value increases or decreases by this much. Okay, percent, fine. In case of modified duration, macular duration says only about the years. ड्यूरेशन पूरा फिनिश हो गया आपका. अब आप देखो यहां पर, if the yield to maturity on bond in the portfolio increases by 100 basis points, the estimated drop in the portfolio value is how much? Please tell me. Yeah, 1.6. अगर आपका बॉन्ड पोर्टफोलियो का yield to maturity 1% या 100 बेसिस पॉइंट से बढ़ता है तो आपका बॉन्ड वैल्यू डिक्रीज होना है, करेक्ट और रॉन्ग? कितने से डिक्रीज होना है? ओके, 1.63%. अगर आपका yield to maturity डिक्रीज हो गया 1% से या 100 बेसिस पॉइंट से, आपका बॉन्ड पोर्टफोलियो का वैल्यू कितने से इंक्रीज होगा? Same thing. That's it, finished. We are